Hello everyone. As you know that I am doing strength of material previous year questions. Okay, so today we are going to see the question of engineering services from the chapter of bending moment and shear force diagram. Okay, so this is about myself. Let's see today's questions. Okay, so here they have given the shear force diagram. Shear force diagram for a beam is shown in above figure. So ये दिया हुआ है हमारा. So the bending moment diagram is represented by which one of the following. तो shear force दिया हुआ है, पूछ रहा है कि हमारा bending moment diagram क्या होगा इस shear force के हिसाब से. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट ये है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा. लेकिन अगर आपको डिटेल में ये सब चीज़ें देखनी है कि कैसे ड्रॉ होता है तो कुछ समय बाद मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेके आऊँगा. वहाँ पे जितनी भी लोडिंग कंडीशन होती है उसकी मैं काफ़ी डिटेल में, क्योंकि इसमें इक्वेशंस बना के करने होते हैं, तो अगर इसमें सब कुछ बताना शुरू करूँगा तो दिस वीडियो विल गो इन 1 आवर and 1.5 hours. So that is not my target. So there I will do everything. Okay, so just wait for some time. I will come up with that. So this type of question you can do very easily if you watch those videos. Okay, so anyway, so see from here what you can do that. If you know what is the SFD BMD for particular loading, it's fine. If you don't know, please remember from the question itself, because sometimes what happens, the same question repeated. Okay, so that is also like you can remember a few of the SFD BMD for different loading conditions. Okay, anyway, so this is the SFD is given, and now we have to tell that what is the bending moment diagram for this particular SFD. So this is see this loading is for this SFD is for this loading. Okay, it is for is given is not given, but actually this is for uniformly distributed load in cantilever. Okay, so this is shear force diagram. So this is a shear force diagram, and obviously if you write the bending moment equation, so and if you plot that, it will be a parabola. Okay, so this will be the parabola. Like here it is minus WL, here minus WL square by 2. So it is a parabola. So its answer is B. Okay, so please remember this for a triangular SFD. Okay, the bending moment will be the parabola. The next question, it's like direct formula question. Okay, so there is not much explanation is required. Just we have to remember the formula. So a vertical hanging bar of length L weighing weight Newton per unit length carries a load W at the bottom. The tensile force in the bar at a distance y from the support will be given by. Okay, so they are asking the tensile force in bar at a distance y from the support will be given. So it is actually nothing but just remember this. It's a W is equal to W plus small w L minus y. Okay, you just remember this. So the answer is B. Next question. Okay, cantilever carrying load whose intensity varies. Let's read the question. A cantilever beam of 2 meter length supports a triangular distributed load over its entire length, the maximum of which is at the free end. Okay, the total load is 37.5 kilonewton. What is the bending moment at the fixed end? Okay, so इसमें कैंटिलीवर दिया है जो 2 मीटर लेंथ है. Okay, it's supported or triangular distributed load over its entire length. ठीक है, triangular distributed load दिया हुआ है, the maximum of which at the free end. So maximum तुम्हारा free end पे है. So the total load is 37.5 kilonewton. What is the bending moment at the fixed end? ठीक है, so these are the options. Anyway, we'll see. देखिए हमें एक जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ट्रायंगुलर है, इसका लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है. सो इस पॉइंट से हमारा लेंथ कितना होगा? इट इज
आपको पता है 2L/3 होता है और इस पॉइंट से L/3 होता है। ओके, सो इसमें उल्टा भी पूछ सकता था, इसमें ऐसे 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 करके ऐसे भी कर सकता था। ओके, तो उस केस में हमारा L/3 हो जाता, फिर इधर से 2L/3 हो जाता। तो बट इसमें हमसे ये वाला चीज़ पूछा है, सो इट इज़ 2L/3। सो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? सो जो हमारा जो ये फोर्स लगेगा उसका, वो उसके सी जी पे, यहाँ पे सी जी होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी पे हमारा ये फोर्स लगेगा 37.5। अब यहाँ से ये लेंथ कितनी है, 2 × 2/3, ठीक है। बस इस बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सो जस्ट वेट इंटू दिस मल्टीप्लाई विद दिस। ओके, सो 4/3, so you'll get 15 × 10⁶ Newton per mm. So its answer is A। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। Okay, so we have to know that what is CG of this triangular shape from from this side and from this side. So this is 2L/3, so this is L/3. Next question, assertion reason question, simply supported beam carrying concentrated load. Okay, let's read that. If the bending moment along the length of a beam is constant, then the beam cross section will not experience any shear stress. Okay, we'll see the reason also. The shear force acting on the beam will be zero everywhere along the length. Okay, we'll see that. Okay, see, if the bending moment along the length of the beam is constant, ठीक है, जो हमारा bending moment है वो length के along the length of beam is constant, then the beam cross section will not experience any shear, obviously, ठीक है। अगर हमारा constant है तो वो shear force नहीं experience करेगा, ये चीज़ correct होती है। Okay, the shear force acting on the beam will be zero everywhere along the length. Yes, तो shear force हमारा along the length है तो वो zero होता है। It's और इसका इस वजह से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द आंसर इज ए। जो इसमें दिया इट इज लाइक करेक्ट है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है कि मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, again assertion reason question. If the bending moment diagram is a rectangle, okay, it is indicated that the beam is loaded by a uniformly distributed moment all along the length. Okay, we see the reason also. The bending moment is represented is a representation of internal forces in the beam and not the moment applied on the beam. Okay, so we'll see, just one second. See, if the bending moment diagram is a rectangle, fine, it indicates that the beam is loaded by uniformly distributed moment along the length. No, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। Okay, the bending moment is representation of internal forces in the beam and not the moment applied on the beam. Yes, ये तो absolutely correct होता है। Okay, so the assertion is wrong, reason is correct, so the answer is D. Next question, the maximum bending moment in a simply supported beam of length L loaded by a concentrated load W at the midpoint is given by, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है, ऑफ लेंथ L लोडेड बाय अ कंसंट्रेटेड लोड W एट द मीड पॉइंट इज गिवन बाय। ओके, तो ये आपका होता है C WL/4। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप यहाँ से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अ सिंपली सपोर्टेड beam is loaded as shown in figure in the above given figure, whatever it is. The maximum shear force in the beam will be, okay, तो ये हमारा लोडिंग कंडीशन, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम shear force, ठीक है। तो इसमें जो हमारा
इसमें जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा इट इज एक्चुअली 2W, ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स होगा 2W, इट्स आंसर इज सी। Next question, if a beam is subjected to a constant bending moment along its length, then the shear force will be if a beam is subjected to a constant bending moment along its length, ठीक है, constant bending moment के बाद बोला then the shear force will be, ठीक है, उस केस में हमारा shear force क्या होगा? Options are also have a constant value everywhere along its length, be 0 at all section along the beam, be maximum at the center and 0 at the end, d 0 at the center and maximum at the end. Okay, so these are the four options. Okay, तो इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बट ओके देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम्स में कि आप जिसमें ऑप्शन 0 दिए होते हैं, ठीक है, तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको रिस्क लेना है तो आप 0 लगा सकते हो। उस केस में अगर आपको लगता है कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, बट इफ़ यू फील दैट यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करके अगर आपको 0 आता है तो आप टिक कर सकते हो। क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि एग्जाम में ऑप्शन 0 होता है और वैसा ही वही ऑप्शन होता है, और मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे कि 0 दिया होता है, 0 नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम 0 होता है आंसर, ठीक है। सो यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ दैट, बट इट्स अप टू यू, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट, बट यू कैन क्रॉस चेक एंड इफ यू फाइंड 0 यू कैन गो विद दैट। Okay, so like this question, if a beam is subjected to a constant bending moment along its length, then the shear force will be 0 all section along the beam, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे ये लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है, ओके, और दे आर आस्किंग loaded beam is shown in figure, the bending moment diagram of the beam is represented by, okay, so ये हमारा लोडिंग कंडीशन, इसमें पूछा कि what is the bending moment diagram for this particular loading, so we'll see that it will be actually A, ठीक है। देखिए अगेन मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे ये हुआ, क्योंकि वो उसके लिए ना काफ़ी इक्वेशंस लिखने होते हैं, फिर प्लॉट करना होता है, ओके। सो फॉर दिस सेक्शन वी हैव टू प्लॉट and this section, you can see that it is also there is 4 sections, so accordingly we have to do here also 4 sections, so we have to write an equation and we have to plot that. So these things I told you many times will deal, I will deal the no how to draw SFD BMD for different loading conditions. So once I will do that, so these type of question you can solve very easily, so you just wait for that. So as of now you just remember the answer is E. Okay, so this was the end of this lecture. So we'll see some more question in the coming videos. Thank you for watching. Bye bye.